Friends, so today is 78 days of maintaining the daily coding challenge streak on a well-known platform LeetCode. So the problem based on the priority queue, and the problem was like pretty much simple, we can say, but like the first approach will not work. If you go with the test case, will not work, but you have to think and play with the test cases, then you will come with a second approach. Okay, the first uh, uh, it is given. So we have classes. For each element in the class represent the first value is the number of students passed, and second value is the total number of students, right? And similarly here 3 students passed out of 5 students, right? So we will calculate the average for this class 0, class 1, class 2, and add all the percentages and divided by the total number of classes, so we will get the average percentage of all classes, right? But the problem is we want to maximize the passing ratio, percentage of passing. For that we have given extra students. These students are brilliant students, right? So we have they can pass the exam if they belong to any class, they will definitely pass. So if we add these 2 students into the class 0, the total number of students will get pass become 3, 1 plus 2, and the total number of students will also get increment by 2, that is will become 4. So 3 by 4, right? So you can see 3 by 4 if we add the extra students to the first class, and 3 by 5 is for second class, not added because the extra students only 2 is there. Adding all the ratios and divided by 3, so we will getting 0.783. If we multiply with 100, it will become 78.33%, right? So we want to know where to add these extra students. The first thing came to my mind that we should create a priority queue, that is a heap, and whose ratio is less, that is this value upon total, we will add them plus 1, but that is not working because 1 upon 2 will give us a ratio of 0.5, right? And this will give a ratio of 3 upon 5, 0.6, and this will 1. So the value upon total अगर हम लोग प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे तो हमको मिलेगा 0.5. तो हम लोग प्रायोरिटी क्यू से अगर मिनिमम एलिमेंट लेंगे, मीन हीप मेंटेन करके रखेंगे पाइथन में, तो 2/3 का है. फिर हम लोग ऐड किया +1 डेट इज़ 1 + 1 2, 2 + 1 3. तो अभी हमारे पास ये आ गया 0.66, और ये 0.6 और 0.1, राइट? अब ये तीनों में स्मॉल कौन है? 0.6. बट यहाँ पे गेम हो जाएगा हमारा, मतलब यहाँ पे भले ही ये स्मॉल है, लेकिन हम अगर इसमें ऐड करेंगे ना तो ज़्यादा हमको रेशो इंक्रीज होते हुए दिखेगा, बिकॉज अगर ये क्वांटिटी यहाँ पे टोटल नंबर स्टूडेंट्स कम है, राइट? और यहाँ पे परसेंटेज में देखूँगा
+1 करके और यहाँ पे +1 करके देखूँगा तो ज़्यादा चेंज मुझे यहाँ देखने मिल रहा है, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि क्वांटिटी छोटी है। अगर इसमें +1 दूंगा तो ये ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा हमें, और ये क्वांटिटी पहले से ही ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सपोज वी हैव 2,3 एंड लेट्स से 9,10, right? If I add +1 to this, like value and total, the 2 + 1 divided by 3 + 1 will become 3/4, and before it was 0.67, right? 2/3, and after it become 0.75, right? And it was before 0.9, and after I add +1 it will become 10/11, will change only, so it will be 11, it will become only 11 0 0, 11 9 99, and when it will become 1, so like it will be like somewhere here only. Like so you can see we are getting a very minute change, that is a 0.09, but here if I add +1 to small quantities I am getting a very big change, that is a 0.1. so where should I add +1? We have to maintain, we have to understand. For that you can see my code, how I maintain that. So it is a min heap, that's why I have, like if I change value upon total is the percentage, if I add +1 total and value, so how much contribution it will make, that's it. So we are taking the difference in terms of negative, because Python heap data structure default is min heap, right? That's why we are taking as well divided by total minus well +1 divided by total +1, which will be a negative because smaller minus bigger हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका कंट्रीब्यूशन इतना रहेगा। ऐसे ही हम लोग कंट्रीब्यूशन सबके लिए पता कर लेंगे, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग जब पॉप कराएंगे हीप में से, फिर से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, और जब कंट्रीब्यूशन परसेंटेज निकालेंगे +1 करके, और फिर बाद में अगर हम लोग +1 वापस से करेंगे उसका भी कंट्रीब्यूशन निकाल के रखेंगे, और फिर से हीप में पुश करते जाएंगे, और फिर बाद में हम लोग हीप को जब तक एम्प्टी नहीं हो जाए वैल्यू अपॉन टोटल निकाल के रखते जाएंगे। फिर तो सिंपल ही, आप तो समझ ही जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे।